हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ ऑफ द डे वी विल सी अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। 7 आर्टिकल्स हैव आई सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट जीएस पेपर्स. If you talk about the India and Canada relations, which are currently going through a turmoil, so you can see that there is a tit for tat strategy which is being adopted, and this topic is relevant to our international relations. And same will be the Vietnam and the Abraham Accords. तो तीनों चीजें हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक से लिंक करती है. फर्दर इफ यू टॉक अबाउट द आईसीएमआर, तो दिस is linked to our GS पेपर 3, that is साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन. ठीक है. उसके बाद हमारा there is a lead editorial about the ethics in the outer space, and this lead editorial talks about that how humans are having an intrinsic and instinctive capacity to compete with each other, and what should be the ethics when we compete in the outer space. So this will be for our GS paper 4, that is the paper of ethics. फर्दर अगर आप देखो तो वक्फ बोर्ड और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर एक्सटेंडिंग द कोटा इज रेलिवेंट टू आर जीएस पेपर 2, दैट इज पॉलिटी. ठीक है. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन एंड start our day with a big smile on our faces, and start our day with this perfection IAS the Hindu analysis, so that our current affairs gets well prepared, and you will see in today's newspaper analysis that how well we will go through all the topics. फर्दर हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, यूपीएससी के बैचेस हमारे. ठीक है. यूपीएससी का नया बैच कल स्टार्ट हुआ है 20 सितंबर को. अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है. यू कैन कम एंड रजिस्टर. यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. एंड furthermore, if you want any kind of mentorship as in to set your strategy right, है ना, strategy to know how to make self notes and to know that how to study at your own pace and how to study at your own space. आप सेल्फ स्टडी कैसे करो, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं है, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है, न्यूज़पेपर समझ में आता है नहीं समझ में आता है, करंट अफेयर्स का क्या करना है क्या नहीं करना है, आंसर राइटिंग में अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आपके प्रीलिम्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड and answered in this mentorship session. This mentorship session is completely free. You can avail mentorship sessions completely free at our office, which is in Delhi, Karol Bagh. You can contact us on this. Drop a message that you need a mentorship session, and you will be scheduled a mentorship session with me. ठीक है. Done. My name is Shansha, and refer my name that you need a mentorship session, and you will be connected to a mentor. ठीक है. Now let's begin with the discussion. And this question of UPSC, which was asked in prelims 2023, talks about the waggle dance which is performed by the honeybees. और honeybees ये waggle dance क्यों करती है, तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है that this waggle dance is for others of their kin to indicate the direction and distance to a source of their food. तो ये वैगल डांस हनीबीज इसलिए करती है ताकि वो बाकी सब हनीबीज को इशारा कर सके कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ पे हमारा फूड है. वाई वॉज दिस क्वेश्चन आस्क्ड, और इतना वियर्ड क्वेश्चन यूपीएससी क्यों पूछ सकता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन वॉज कवर्ड इन एन एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑन 11th of the March 2023. 2023 11 मार्च को हिंदू में एक एडिटोरियल आया था अबाउट अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ हनी बी डांस, एंड इसी में दिस वैगल डांस वाज मेंशन्ड कि हाउ हनी बीज डांस. और वैगल डांस ही नहीं, और भी बहुत टाइप्स थे डांस के जो इस एडिटोरियल में द हिंदू ने डिस्कस किए थे. ठीक है. तो दैट इज वाई ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, और इस डिस्कशन के साथ साथ जो आर्टिकल आता है उस आर्टिकल की डेप्थ में जाना जरूरी है. ठीक है. तो दैट इज द प्रूफ, and that is how we make out of the Hindu our UPSC success. ठीक है. So let's begin with this first editorial and first news which came on the headline and front page, and this talks about the issue
of India and Canada relations and how India and Canada relations are going through a turmoil. अब हुआ क्या है अभी रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो वंस ही स्टार्टेड एलिजिंग इंडिया फॉर किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जार, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जार जो हमने कल के केस में देखा था, कल के केस स्टडी में ये कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में हमने देखा हु इज दिस पर्सन, ही इज रिलेटेड टू खालिस्तान टाइगर फोर्स, ठीक है, और इसकी किलिंग के बाद बाइलेटरल टेंशंस क्यों बढ़े हैं। डन। तो अब हम आज के न्यूज़पेपर में ये देखेंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कल के न्यूज़पेपर में, दैट जो वहाँ के लोग हैं, कनाडा के लोग, जो कनाडा में जो इंडियन डायस्पोरा है या इंडियन में जो कनाडा कैनेडियन डायस्पोरा है, तो दोनों को एक एडवाइजरी जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दैट यू शुड बी कॉशियस व्हाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल, दैट इज समथिंग नॉट रेलिवेंट टू अस, ठीक है, बट व्हाट इज रेलिवेंट टू अस is India Canada relations. We should be knowing about this. So we started our diplomatic ties in 1947 and then we elevated our these diplomatic ties to strategic partnership in 2015. आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में we will see that what is the difference and what is the basic दिस एंगेजमेंट एट डिप्लोमेटिक लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। जब हम देखते हैं तो क्या है बेसिक एंगेजमेंट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टनरशिप, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, बिकॉज दिस टॉपिक इज देयर इन दो एडिटोरियल्स में आया है, एक तो इंडिया कनाडा रिलेशंस, दूसरा वियतनाम के एडिटोरियल में जो हर्षवी पंत ने लिखा है। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड, ठीक है, बिल्कुल हम डिटेल में जाएंगे और बेसिक्स में जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। नाउ इंडिया कनाडा रिलेशंस, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हम बन गए 2015 में, ठीक है, वी आर नाउ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स या बायलेटरल मैकेनिज्म में हमारे पास क्या क्या है, व्हाई इज दिस कॉल्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड हाउ टू डिफाइन दिस थिंग दैट वी आर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, we are in a strategic partnership, and what is the difference between a normal partnership, normal alliance, MOU, AOA, economic partnership or trade related partnership, security partnership, all of this will be dealt with examples. नाउ इंडिया कनाडा रिलेशंस में बायलेटरल मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो वी हैव डायलॉग्स एट वेरियस लेवल्स, लाइक सिक्योरिटी डायलॉग है हमारा, है ना, वी हैव ट्रेड एंड एनर्जी डायलॉग्स, और हमारे पास सिमिलरली वी हैव दिस डायलॉग मैकेनिज्म कॉल्ड एज द फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स which we have set up for bilateral mechanisms. Then कमर्शियल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी इनटू द नेगोशिएशंस ऑफ सेपा। व्हाट इज सेपा? दिस इज अ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो इंडिया और कनाडा के बीच में अभी इसमें डायलॉग चल रहा है, दैट वी विल सेट अप। एंड बायलेटरल ट्रेड जो हमारा है इट इज अबाउट $8 billion बाय 2022। मूविंग फर्दर, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, तो वी स्टार्टेड न्यूक्लियर कोऑपरेशन इन 2010 by signing nuclear cooperation agreement in June 2010। जून 2010 में हमने स्टार्ट किया था क्या, दिस न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विच केम इनटू फोर्स इन 2013। 2023 में ये आया फोर्स में, एंड इसके बाद वी आल्सो सेट अप अ जॉइंट कमिटी ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। क्या हमने किया, एक जॉइंट कमिटी भी बनाई ऑन सिविल न्यूक्लियर cooperation. So this nuclear cooperation is for civilian purposes only, that is energy generation and the research purposes. Science and technology में we have collaboration in artificial intelligence, nanotechnology, healthcare and more. इसमें जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एन एक्शन प्लान विच वाज जॉइंटली क्राफ्टेड इन 2017, दैट वाज एक्शन प्लान, action plan of 2017 which was jointly crafted by India and Canada, particularly the Department of Biotechnology through the IC impacts. What is this IC impacts? This is a program running between India and Canada, ठीक है। ये जो IC impacts program है, this conducts a joint research. This is a program to conduct joint research, ठीक है, जॉइंट रिसर्च। और इसके बाद इन दी हेल्थ केयर एंड एग्री बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट,
Additionally, we also have a Department of Earth Science and Polar in Canada, which has initiated a knowledge exchange program in Arctic studies. So we are collaborating on Arctic studies also. ठीक है, with India, with Canada. ठीक है. Moving further, तो space में, in space, if you see that the cooperation in space science, satellite launches and satellite launch services have been launched between the two countries, और इसमें we signed MOUs in 1996 and 2003. The MOUs were signed between ISRO and the Canadian Space Agency. ठीक है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच में जो है एमओयू साइन हुए थे 1996 में, 2003 में, अबाउट द स्पेस कोऑपरेशन. मूविंग फर्दर, द सिक्योरिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म की अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो हमने सेटअप किया है दैट इज द जॉइंट एफर्ट्स इन यूनाइटेड नेशंस एंड कॉमनवेल्थ, प्लस वी आर ऑल्सो जॉइंटली काउंटरिंग द टेररिज्म. ठीक है. फर्दर हम G20 का भी पार्ट है ना. G20 के साथ साथ द डिफेंस टाइज हैव आल्सो एक्सपेंडेड फॉर जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन काउंटर टेररिज्म. ठीक है. फर्दर अगर आप एग्रीकल्चर पे देखो तो यस, 2009 में हमने पहला एमओयू साइन किया था ऑन एग्रीकल्चर एंड द टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ऑल्सो देर इज अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर पल्सेस. एजुकेशन में यस, कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर देयर इन इंडिया एंड इंडियन स्टूडेंट्स आर देयर इन कैनेडा. ठीक है. पीपल टू पीपल टाइज, यस, देर इज an ample amount of Indian diaspora, which constitutes around 4% of Canada's population. ठीक है. तो challenges, what are the challenges with respect to India and Canada relations? तो challenges में अगर आप देखो, there are two issues. One is खालिस्तानी separatism, है ना, जो सबसे important चीज यहाँ पे अभी चल रही है. इसी में निज्जार किलिंग भी आ जाएगा. ठीक है. इसी में सितंबर के मंथ में हमने ये देखा, अगस्त के मंथ में हमने देखा था दैट इंडिया एंड कनाडा वेंट ऑन टू रिएक्टिंग ईच अदर ऑन वन थिंग. और इसमें क्या हुआ था कि कनाडा और इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ था दैट वाज द राइट टू फ्री स्पीच इन कनाडा एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज. दैट वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था, सिख डायस्पोरा था, दे स्टार्टेड स्लोगनियरिंग in the streets of Canada against India and in the support of Khalistan movement. And that was the point which became the contentious point between India and Canada. अब जो ये खालिस्तानी सेपरेटिज्म है, इसमें देर आर अराउंड मोर देन आई गेस 5 लाख individuals, 5 lakh Sikhs or 5 lakh individuals which are there in the country, that is Canada. These 5 lakhs are from Sikh community. ठीक है. They are from Sikh communities, and the presence of this Sikh separatist group in Canada has emerged as an increasingly contentious issue when we talk about India-Canada relations. अब इससे हुआ क्या है? The problem is some percentage of this community, they start protesting and they start raising sloganeering and they start a movement abroad in support of Khalistan. ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट. एंड दैट क्रिएट्स अ रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. फर्दर, ट्रेड नेगोशिएशंस हैव बीन स्टॉल्ड एज द एलिगेशंस ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन मर्डर केस. कौन सा मर्डर केस? ये निज्जार मर्डर केस. अब इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे ऊपर? इम्पैक्ट ये पड़ा है दैट SEPA could have boosted around $6.5 billion of trade. These are the other challenges which with respect to India-Canada relations. And investments in Canada. Canada ranks around 17th in the foreign investments in India. Plus, Indian students जो Canada जाते हैं तो उसमें largest source of international students in Canada is Indian community. Sikh community का जो आप देखो तो there are tensions which may affect the Sikh families and may impact the economic interests of both the countries. क्योंकि वहां पे भी there is majority of the like labor force which is constituting of the immigrants only, and particularly this
community, and this may set up a different tone and tenor in this relation now. ठीक है, तो इसके बाद uh, what is particularly the way forward, what should we do? Yes, there should be dialogue and diplomacy, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे हमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, एंड सेपा कैन अनलॉक अराउंड द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज. काउंटर टेररिज्म मेजर्स पे वी नीड टू फोकस मोर, है ना, so that we stop these type of incidents and the relations remain smooth. We should promote Sikh community engagement in both the countries. Further, yes, there should be multilateral engagement and respect for the sovereignty and integrity of nation, and we should also respect that the two nations have two different issues, and these issues are internal in nature. They are internal issues of India and Canada. ठीक है, so we should not intervene into both of them. Moving to the next news, and this news talks about the TrueNat. What is this TrueNat test? और ये TrueNat test निपा वायरस के लिए क्यों किया जाएगा? This TrueNat test was basically developed by a Goa-based Molbio Diagnostics. ठीक है, ये एक फर्म है गोवा में, Molbio Diagnostics, and this Diagnostics developed this test, and this test is used to detect Nipah virus. Particularly, this is a polymerase chain reaction based test which was first used to detect the TB bacteria, and this can not only detect the presence of the bacteria but can also detect कि ये बैक्टीरिया जो है ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं, अगर ये टेस्ट में चिप्स का यूज किया जाए तो. Then this DNA of this TB bacteria is extracted from sputum samples of the patient, and उसके बाद उसको चेक किया जाता है. And now the government has issued, this ICMR has issued a nod to conduct these tests to detect Nipah virus also. ठीक है, Nipah virus अभी केरला में है, and there are I guess around 8 to 10 cases now. ठीक है, so far, and 300 and I guess 323 samples have been collected for Nipah so far, and the cases are rising, है ना. तो अर्लियर 2018 में हमने देखा, 2016 में हमने देखा दैट सच एपिडेमिक्स हैपेंड इन इंडिया. ठीक है, 2018 में तो केरला में बहुत ज़्यादा हुआ था, और उससे पहले वी सॉ इट इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल. टॉकिंग अबाउट दिस एडिटोरियल, ठीक है, विच इज द लीड एडिटोरियल रिटन बाय गोपाल कृष्ण गांधी, हु इज अ फॉर्मर एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट एंड गवर्नर. ठीक है, तो द ऑथर हियर हाईलाइट्स सम पर्टिकुलर पॉइंट्स. ठीक है, और ऑथर हाईलाइट क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? This article particularly begins with an itch. ठीक है, and he says that humans by nature have this curiosity, और humans के अंदर ये चीज है that वो हमेशा competitive रहते हैं. They always are competitive in nature. What do we mean by this competitive nature of humans? That they are always in a race. जो हमने थ्री इडियट्स में डायलॉग देखा था, लाइफ इज अ रेस, है ना, लाइफ इज अ रेस, you need to run, and this race is the first survival instinct, and this is the animal instinct. ठीक है, जो हमें समझना होगा, एनिमल इंस्टिंक्ट एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. नाउ अगर यही क्वेश्चन हमारे एसे में आए या एथिक्स में आए, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस ऑथर ने इस चीज को कैसे साबित किया है, कैसे इसको सबस्टैंशिएट किया है, और कैसे इसको लिखा है, ताकि हम भी अपने एसे को, अपने आंसर को ऐसे लिख पाए. तो ही स्टार्ट्स विथ एन इंडिविजुअल एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ रॉबर्ट स्कॉट, ठीक है, एंड रोल्ड एमंडसन. उसके बाद ही शिफ्ट्स towards the country level examples, and then the Antarctic, and at the later he shifts towards the space, और उसके बाद at the last he shifts towards the India's achievements in Chandrayaan 3. Let's begin the discussion. The race to the South Pole between Robert Scott and Roald Amundsen happened in 1911 and 1912. Amundsen won the race, reaching the South Pole on December 1991, 34 days before Scott. एक्चुअल में हुआ क्या था? There were two persons. Robert Scott thought to go to the South Pole, whereas Roald Amundsen was planning towards North Pole. But when he saw that this person is going towards South Pole, so he also started the race, and this Amundsen won the race. ठीक है. Similarly, this article begins by highlighting this human drive for exploration. This
race was for the exploration of South Pole, because till that date no one had put a foot on the South Pole of the Earth. ठीक है. तो Roald Amundsen, he highlights that how Roald Amundsen is an example of this race and competitiveness among the humans. It underscores the significance of the territorial claims, and this point here highlights कि कैसे एक टेरिटोरियल क्लेम के पीछे, एक टेरिटरी पे पहुंचने के पीछे, एक टेरिटरी को क्लेम करने के पीछे द पर्सन गोज मैड एंड ही स्टार्ट्स अगेंस्ट ऑल द ऑड्स. ठीक है. एंड इट अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रॉइंग पैरेलल्स बिटवीन द एंटार्क्टिक्स. नाउ द एंटार्क्टिक ट्रीटी which was signed in 1959, and further the colonization era, which we will see after this, that how this editorial traverses from the Antarctic Treaty to colonial era and then to Chandrayaan 3. तो the author here highlights कि कैसे इन दोनों ने they started this race just to set a foot on the South Pole. ठीक है. Although the one person who was this Roald Amundsen, he was traveling towards the North Pole and Robert Scott was traveling towards the South Pole. However, the natural instinct and competitiveness between the two, this happened that Roald Amundsen reversed his journey, and he also uh, put the direction and started navigating towards the North Pole, this South Pole. Then the author shifts his फोकस टुवर्ड्स द एंटार्क्टिक ट्रीटी. और ये ऑथर कहते हैं कि एंटार्क्टिक ट्रीटी जो कि 1959 में साइन हुई थी वाज देयर टू रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटी इन अंटार्कटिका, है ना. बट द एंटार्क्टिक ट्रीटी also prohibited nuclear testing, military operations, and economic exploitation in this region. Further, this also stopped the territorial claims in the Antarctica. ठीक है. तो ये ट्रीटी ही इसलिए हुई थी ताकि जो ये नेचुरल कॉम्पिटिटिवनेस या नेचुरल टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड नेचुरल टेरिटोरियल गेन, इसकी जो टेंडेंसी ह्यूमंस के अंदर है और द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और द स्टेट्स और कंट्रीज जो इनके अंदर ये है दैट वी नीड दिस टेरिटरी, वी नीड द टेरिटोरियल क्लेम्स ऑन दिस थिंग, वी नीड द टेरिटोरियल क्लेम्स ऑन इवन मून. ठीक है. तो दिस क्लेम एंड दिस कॉम्पिटिटिवनेस, दिस इंस्टिंक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड देन विच लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, है ना. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद एक्सप्लोरिंग. एज एक्सप्लोरिंग किसने किया था, वास्को ड गामा ने. ही स्टार्टेड विद एक्सप्लोरिंग. देन आए ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी सारे कंपनीज ब्रिटिशर्स, दे स्टार्टेड विद व्हाट, एक्सप्लोरिंग एंड देन ट्रेडिंग, है ना. एंड देन दिस एक्सप्लोरेशन लीड्स टू व्हाट, एक्सप्लॉयटेशन, है ना. एंड दैट इज द जर्नी. और ऐसे ही आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी, अगर आप ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को देखो तो सेम थिंग हैपेंड इन अंटार्कटिका ऑल्सो, है ना. इसीलिए अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की गई थी. दैट इज वाई नाउ द ऑथर हाईलाइट्स कि कितना इंपॉर्टेंस है मून एग्रीमेंट्स का. दिस मून एग्रीमेंट विच वाज साइंड इन 1972 1979 to regulate human activity on the moon. The moon agreement states that moon and its natural resources are common heritage of mankind, है ना. ये जो मून है और मून के रिसोर्सेज, दे आर कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. दे आर नॉट a property or a territory of anyone. That an international regime should be established to govern their exploration when it becomes feasible. ठीक. This article suggests the advancements which were there in the Moon Agreement. And this article says that how much important is this to regulate the instinct and the competitive nature of these humans. ठीक है. Therefore, this article concludes by saying this thing that we need a new human ethics for the human activity in outer space. क्यों हमें ethics चाहिए outer space के लिए, क्यों चाहिए ethics हमें outer space के लिए, और क्यों हमें इसको ethically govern करना चाहिए? Because there is militarization which is going under the water under the grass. जैसे water under the grass is moving, वैसे ही militarization is happening for the outer space, and that is why we need an ethical dimension, we need an ethical way, we need an ethical governance to govern the outer space. ठीक है. और इसमें the author suggests the outer space treaty and moon agreement are such steps towards governing the outer space through ethics. This
proposed declaration should establish a new ethical framework for emphasizing. One is non militarization. सबसे पहले हमें क्या करना है? नॉन मिलिटराइजेशन करना है. सेकंड इज responsible practices. Third is the space-faring nations should cooperate and collaborate while exploring the space. Therefore, this article concludes on the ethical behavior of the outer space exploration. Even though by saying this thing that India is the nation which has now landed successfully on the moon's south pole, we should also lead, take a lead in setting this ethical governance at the international level. ठीक है. Although we were not there in Antarctic Treaty or Moon agreements, but we can be there in the outer space exploration and the treaties to govern the exploration in the ethical way. That is why we need a giant leap in the new ethics, because till now ethics has been there for the regulation of human to human interaction. Now we have to bring this ethics in the outer space exploration also. Let's move to the next editorial from International Relations. This editorial talks about the Vietnam. The editorial was written by Harsh V. Pant and a fellow Vivek Mishra, who both are there in the Observer Research Foundation, that is the ORF India. ठीक है. Now they highlight that how the Vietnam and Indo-Pacific are changing the puzzle. ठीक है. और अमेरिका कैसे इस पजल को चेंज कर रहा है, इंडो पैसिफिक के पजल को. ठीक है. Why is there this balance and why is there the intervention between the two? ठीक है. Starting with this thing, तो एडिटोरियल जो ऑथर है he highlights this thing that जो अभी recent most development हुआ है, that is कि इंडिया Saudi this United States and Vietnam have upgraded their partnership from a comprehensive partnership to comprehensive strategic partnership. Now they are strategic partners. Comprehensive partnership was there in 2013. Now they are strategic partners. This elevation is a sign that Vietnam is now growing its strategic importance in Indo-Pacific region. ठीक है. अब Indo-Pacific region में अगर US is intervening through Vietnam, US is engaging with Vietnam, India, and other nations or Southeast Asian nations. ठीक है. United States is engaging and improving its relations with all these nations. ठीक है. But the point here to understand properly is that how United States is going through and is using the mechanism of offshore balancing. That is, it's not directly involving itself into this region. Rather, what it is doing is it's doing the offshore balancing. ठीक है. Therefore, this elevation is a sign of Vietnam's growing strategic importance. So now, what will be the next step? The US-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership is expected to focus on enhancing the political trust, strengthening science, technology, health, digital innovation, and all. ठीक है. However, with this, there will be a strong defense relationship also between US and Vietnam. This is the point which is changing the dynamics, which is changing the puzzle of Indo-Pacifics. How is this changing the puzzle of Indo-Pacific? That is the question which we need to ask ourselves. So one of the key components of this comprehensive partnership is to start a process of friend shoring, ठीक है, supply chains in the semiconductor industry to Vietnam. That is the first, you can say, a blow on the face to the Chinese semiconductor industry, even as it seeks to boost Hanoi's chip manufacturing capabilities. है ना. और इससे क्या होगा now? There are now two markets. When an MNC is exiting from China, it can now go to Vietnam or India. ठीक है. Subject to which of the country provides it a better platform. ठीक है. Because this semiconductor industry and friend shore supply chain or friend shoring supply chain is there, which will be more intimidating towards any MNC which is moving from China, and it will be more intimidated towards Vietnam.
In the similar way, India has also taken some initiatives like critical and emergency technology partnership, a partnership with United States, and there are quad principles also, which are for critical and emerging technologies, which can provide an overarching framework in the Indo-Pacific for the standardization of technology. Therefore, this entire dimension of technology is based on this thing, that the manufacturing hub or the assembly hub and producing the chips and the chip technology, which is going to be the next wheel for the humanity, and an integrated chip and this chip based industry. This is the point जहां से अभी first the geoeconomics will change and then this will lead to geopolitical changes. ठीक है, as China is at the present times, contemporary times, it's facing a slowdown in its economy. It's facing a slowdown continuously from past 2 quarters in its exports, and that is the crucial time when USA is supporting the Vietnam. ठीक है, मूविंग फर्दर दिस सप्लाई चेन फ्रॉम वियतनाम टू यूरोप, ठीक है, जो वियतनाम से लेके यूरोप तक अब सप्लाई चेन बनेगी वाया वेस्ट एशिया, विल बी एंकर्ड बाय इंडिया। दैट इज कि जब वियतनाम से जाएगा माल, वो कहां से जाएगा, वो इंडिया के थ्रू होते हुए जाएगा वेस्ट एशिया, ठीक है, वेयर देयर इज सऊदी अरेबिया, एंड देन इट विल एंटर द मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, this is the point जहां पे the India Middle East Europe economic corridor, which was just newly launched, yes, some days back it was launched in the G20 summit. ठीक है, this India Middle East Europe economic corridor will be now the symbol of entire of this partnership, this strategic partnership, because this industry and entire trade and the route starts from Vietnam and ends at Europe. However, this anchors at India and this anchors at West Asia. That is why entire game is now important, and this is going to change the spectroscope of geopolitics and geoeconomics. Okay, so let's see that what kind of partnerships are there. As we have seen that there are bilateral relationships, and we have seen the strategic partnership between Vietnam and United States. We also have seen the partnership between Russia, this India and Canada, that we are strategic partners. So let's see different types of partnerships in international relations, which is a part of fundamentals. As UPSC has been asking around 30 questions from your fundamental knowledge, which an aspirant should know at any cost. ठीक है, वो वाली नॉलेज आपको होनी ही चाहिए. What is the difference between some partnerships and what do you mean by these partnerships? What is a strategic partnership? This is a long-term partnership between two or more countries that are based on shared interests and goals. This long-term partnership encompasses the defense, trade, security. ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है, shared values and interests. This also includes defense, trade, security, and culture. This also includes regular dialogues and cooperation between the two countries. This strategic partnership helps both the countries to boost their foreign policy goals. The examples of the strategic partnership are United States, United Kingdom, US and UK. You can also say India and Canada. है ना? You can say US and Vietnam now. है ना? Therefore, this NATO is a strategic partnership between 30 countries of the North America and Europe. They are committed, or this NATO is an example of defense partnership also. European Union is a strategic partnership between 27 countries of Europe. Similarly, this economic partnership also. What is economic partnership? The primary goal of this partnership and primary goal of this engagement is for trade agreements, investment agreements. Why? Because they are primarily driven by the economic interests. Like NAFTA, that is the North American Free Trade Agreement, or SAFTA, that is the SAARC Free Trade Agreement, or you can say the Trans-Pacific Partnership Agreement between the 12 countries in Pacific Rim region. These and WTO,
These are the partnerships which are based on economic interests. ठीक है, and these are economic partnerships. Political partnerships involve the cooperation on international issues like human rights, democracy, and peace building. For example, G7 is a political partnership between seven major industrialized countries like United States, Canada, UK, France, Germany, Italy, and Japan. Similarly, Commonwealth nations is a political partnership of 56 countries which share similar ideologies. Moving further, security-based partnerships, they are particularly focused on defense, counterterrorism, and security challenges. Security-based partnerships like NATO is a security-based partnership between 30 countries, जैसे मैंने पहले बोला. Five Eyes is an intelligence sharing partnership between US, UK, Canada, Australia, and New Zealand. Quad is a security partnership between US, Japan, India, and Australia. तो इस चीज को समझना है, यही आपका फंडामेंटल है, ये आपका बेसिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का. ठीक है, व्हेन टू कंट्रीज एंगेज विद ईच अदर, हाउ डू दे एंगेज, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स विच आर देयर. जब आपको बोला जाए दैट यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर नाउ सिक्योरिटी पार्टनर्स, दे आर नाउ डिफेंस पार्टनर्स, है ना, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट व्हाट आर दे पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पार्टनरशिप. ठीक है. Further, cultural partnership is between the exchange of students, artists, scholars, and other joint cultural projects. Like Fulbright program is a cultural exchange program which provides scholarship to the students and scholars from around the world in United States. Similarly, British Council is also, and the Alliance Francaise is a cultural organization which promotes the French language. ठीक है. So let's move to the next editorial, which talks about the 3 years of Abraham Accords. 3 साल हो गए अब्राहम अकॉर्ड्स को, और क्या की पॉइंट्स हमें यहाँ से याद रखने हैं, सो दैट हमें ये अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, ताकि हम अपना यूपीएससी का आंसर अच्छे से लिख पाए. दिस अब्राहम अकॉर्ड, which was signed 3 years ago, have assured a era of peace and cooperation in West Asia and North Africa. This accord have resulted in number of benefits for India, like सबसे पहली चीज, ये अब्राहम अकॉर्ड कहाँ हुआ था? The 3 years of signing of Abraham Accord was between Israel, UAE and Bahrain. किस किस के बीच में? Israel, UAE. So the increased connectivity between India and the Gulf region with direct flights between UAE, Israel, as well as between Israel and Bahrain are such of a step, one of the steps which we have seen in the post Abraham Accord area, or in the post Abraham Accord region, this era. Now the point here is, in the last 3 years of the signing of Abraham Accord, the enhanced trade and economic opportunities have increased, with Israel, Bahrain, and US and UAE partnering with the other Indian private sector. Further, there was an establishment of I2U2 group, which was formed by Israel, India, UAE, and US to focus on the joint investment in critical areas such as water, energy, transportation, space, health. तो ये कुछ points ऐसे हैं जो यहाँ पे author, the Israeli ambassador to India, is highlighting these points कि अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद how many steps and how many opportunities and how many, what kind of progress has been achieved in the relations between the two countries. Further, कुछ और points जो हम यहाँ पे देखेंगे, that is the youth delegation which were sent and shared between the two countries to develop a bond between the upcoming and tomorrow's leaders. Similarly, there are Israeli students and Morocco and UAE based students who are enrolled in Israeli universities now. Moving further, you need to remember some key facts about the accords and about this, which were there highlighted in this article, so that you remember these facts and you use these facts in your mains answer. First is post-Abraham Accords. The agreement facilitated normalization of relations between Israel and Arab nations. And in this
scenario, it also brought regional stability and cooperation. अब ये चीज तो नॉर्मल थी, इसके साथ साथ ट्रेड इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? बिटवीन इसराइल एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज ग्रो बाई 74% इन 3 सालों में। टूरिज्म इंक्रीज्ड बाई 172%। ठीक है। और कनेक्टिविटी हैज आल्सो इंक्रीज्ड विद द डायरेक्ट फ्लाइट्स, एज वी सॉ द डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम गल्फ रीजन एंड इंडिया आल्सो। बायलेटरल एग्रीमेंट्स में, एग्रीमेंट लाइक prosperity green and blue agreement, they have strengthened the relation and created opportunities for cooperation in various sectors. Similarly, multinational cooperation is also there post this Abraham Accord was signed. ठीक है। And in particularly COVID era and post COVID era, there is increased engagement between the two, between these four nations, which were there part in some or the other way, they were part of this Abraham Accord. ठीक है। So let's move to the next editorial. This editorial was there in the explainer section, and this editorial talks about the वक्फ boards. क्या होते हैं वक्फ बोर्ड्स और इस एडिटोरियल में क्या न्यूज है? टोटल समरी इस न्यूज का ये है दैट अभी रिसेंटली यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री took control of around 123 properties which were owned by Delhi Waqf Board, including mosques, dargahs and cemeteries. क्यों? और ये कंट्रोल लेने के बाद देयर वाज अ कमिटी विच वाज सेटअप. दिस कमिटी वाज सेटअप बाय दिल्ली हाई कोर्ट एंड दिस कमिटी वाज टू असेस द स्टेटस ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स, कि जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं इनका करना क्या है, क्या स्टेटस है, और ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली दिल्ली वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, ये सब चीजें इनको क्वेश्चन में थी और ये कमेटी की रिपोर्ट अभी आने वाली है. व्हाट इज अ वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. These Waqf boards are formed under the Waqf Act of 1995. These Waqf boards are responsible for management and administration of the properties of Waqf. What is Waqf? Waqf are those properties which are usually donated and dedicated for religious or charitable purpose under Islamic law. They some people or Muslims around India or inside India, what they do is they perform charity or they perform donations in the form of property, in the form of cash or any other thing. So this waqf, they actually do what? They will take care of these charities. Then they will generate income out of these charities, and then that income will be used for religious purposes. Done. There are around 30 waqf boards in India in each state and union territory. They manage and they are managed by board of directors, which is appointed by the state government. These are funded by state governments, and the income generated from these waqf boards is also managed by the waqf boards only. ठीक है. What is the responsibility of these and who is appointing and supervisor is called as mutwali. Maybe this term could be asked somewhere in the prelims in between, because this is a medieval era term and UPSC usually asks medieval era terms. ठीक है. Moving to the next news, and this news pertains to the reservation concept of and the reservation for scheduled caste and scheduled tribes. Recently, a constitution bench was formed to examine the validity of extending the quota for SCs and STs in Lok Sabha until 2030. 2030 से पहले एक बेंच बनाया जाएगा जो कि कंसिडर करेगा द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, जिसने एक्सटेंड किया था, क्या चीज एक्सटेंड किया था? रिजर्वेशन. किनका? SC ST का. कब तक के लिए? 2030 तक के लिए. However, this constitution bench will be headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, है ना. Further, this bench decided to examine the constitutionality of these recurrent extensions, कि जितना भी recurrent extension हुआ है आज का जो इसके बाद जो हम देखेंगे नोट्स, वो इन्हीं recurrent extensions पे है. दैट हिस्टोरिकली एंड क्रोनोलॉजिकली हमने कब कब क्या क्या किया है, किससे रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन से. वी विल स्टार्ट फ्रॉम साइमन कमीशन और आज तक 2019 तक का जो एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट, तब तक कितनी चेंजेस आई और कितने एक्ट्स आए और कब क्या हुआ, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. ठीक है. These recurrent extensions, are they constitutionally valid or not? This will be discussed
through and on the tables of this constitution bench. What is the historical context of this reservation? Originally, the Constituent Assembly had intended this reservation only for 10 years. जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हुआ 1950 में, उस टाइम पे this was only for 10 years. Article 334 of our constitution governs the time period. ये याद रखना है, ठीक है. Constitution itself governs the time period for reserving seats of SC and STs and Anglo-Indians. After a decade, after 7 decades, 70 years होने के बाद we terminated the reservation of Anglo-Indians last year. ठीक है, 2019 में. The deadline of ending reservation was consistently extended by 10 years through various constitutional amendments. हर साल हम 10 और साल के लिए इसको बढ़ा देते थे. कहां से स्टार्ट हुआ है? 2019 का जो अमेंडमेंट था, this amendment terminated the reservation of Anglo-Indian community, which was and set a deadline of 2030 for SC/STs. By 2030, these communities would have benefited from the reservation for last 80 years. ऐसा उस टाइम का आर्ग्यूमेंट था. 2019 का आर्ग्यूमेंट ये था दैट 2030 तक 80 साल हो जाएंगे इनकी रिजर्वेशन को, और अभी तक इनको पूरे बेनिफिट्स मिल गए हैं रिजर्वेशन के. सो नाउ द 2030 is set as deadline for ending this reservation. Now, what's the legal question in this? Why should we end this and why should we not end this? That is secondary question. But what is the legal question? Who can end it? The Constitution bench only will examine whether the Parliament has the constitutional authority to repeatedly amend Article 334 and extend the period for SC/STs in Lok Sabha and state legislative assemblies. Whatever Parliament has been doing in multiple years, you call it 1993, 82, 71, 56, जब भी ये order आया है, जब भी amendment हुआ है, was this constitutionally approved or not? Therefore, court will clarify this thing and court will assess only the validity of 104th Constitutional Amendment Act, and it will not address the termination of Anglo-Indians because that is now terminated and they have already enjoyed the benefits till 70 years. This constitution bench will be composed of 5 judges and they are scheduled to start hearing from November 21 to examine the constitutionality of these recurring extensions. Now let's begin with the historical aspect of this reservation. So starting from 1931, पहला step for the separate electorate of depressed classes was there in Simon Commission. कमीशन ने बोला था दैट सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए किनको? डिप्रेस्ड क्लासेस को. और उसके बाद ही 1932 में पूना पैक्ट हुआ. ठीक है, दिस साइमन कमीशन वाज देयर इन 1927. हाउएवर 1931 के बाद जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था, रिकमेंडेशन को डिस्कस करते टाइम ही ये चीज आई थी सामने दैट डिप्रेस्ड क्लासेस का रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट. देन पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी दे settled down on this thing that depressed classes are granted the reserved seats in provincial legislatures and central legislative assembly. In the 1935 act, it was provided that there will be reservation of seats for SC and ST in the provincial legislature and central legislative assembly. That was a next step after this Pune Pact. इसके बाद the Government of India Act 1949, which continued the reservation of seats in the legislatures, and Constitution of India also adopted this thing in the similar way in Article 334. ठीक है. So the first amendment to the Constitution, which was passed in 1951, extended this reservation to of seats for scheduled castes and scheduled tribes to state legislatures also. इसके बाद 1955 में पहला ऑर्डर आया which said that there will be list of scheduled tribes in each state and union territories, और ये लिस्ट को स्पेसिफाई करेगा यूनियन. ठीक है. और इस लिस्ट के बाद there was a list of orders and amendment act of 1956 which said and amended the constitution to make the list of scheduled caste and scheduled tribes
subject to revision by Parliament. ठीक है. It was the Scheduled Caste and Scheduled Tribes List of Orders Amendment Act 1956, जिसमें बोला गया था that there will be revision of this list by Parliament. That ये जो लिस्ट होगी SC STs की, उसमें कौन ऐड होंगे कौन डिलीट होंगे, वो पूरी लिस्ट को रिवाइज करेगा पार्लियामेंट. डन. 1971 में दिस रिजर्वेशन दिस एक्ट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा बाय 10 years. ठीक है. तो 1971 से ये एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया. उसके बाद अगेन 10 years, उसके बाद 30 years, एंड देन अगेन बाय 10 years in 2000, एंड इन 2019 it was again extended by 10 more years. ठीक है. Further, more than this reservation, there are scholarships, educational financial assistances, housing reservation in jobs, reservation in educational institutions, which are being provided to these communities as welfare measures by the state. ठीक है. So let's wind up our today's discussion with a UPSC mains PYQ. मेंस में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में जीएस थर्ड पेपर में अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एंड पूछा गया था दैट डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग. तो सबसे पहले हमें डिस्कस करनी है ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन हमें मेंशन करने हैं इसके इफेक्ट्स, और उसके बाद हमें देखना है कि क्या हमने कंट्रोल मेजर्स लिए हुए हैं ऑलरेडी, है ना, to decrease the level of greenhouse gases which cause the global warming in the light of Kyoto Protocol 1997. तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं वो सारे एक्सप्लेन करने हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स बताने, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये भी बताना है. अब अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करते टाइम बस इतना लिखो कि ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, है ना, तो then that will be a lame answer. You need to begin with facts and figures. You need to begin with reports of IPCC, है ना, which talk about the increase of global temperature in past centuries. ठीक है. Since the Anthropocene era, आपको ये दिखाना पड़ेगा that how these pollutants and how these emissions and these gases which are there now targeted under Kyoto Protocol, because they are highly warming gases. These gases have the potential of warming the global temperature. And why should we focus on these gases only under Kyoto Protocol? What were the significance? What are the presence of these gases? ठीक है. And at the last, you should conclude with this principle of common but differentiated responsibilities. For the answer, and just to make you more comfortable with answer writing, I have provided you with this value addition slides. You can read about the Kyoto Protocol and the measures which were taken in Kyoto Protocol, and some other measures which were outlined in Kyoto Protocol. You can discuss this, you can understand this, read about it more, and then answer this question. Once you answer this question, you can send that question on this number. I'll directly evaluate it and I'll get in touch to you so that you understand better way that how to write answers. This entire process and this Hindu discussion is totally and freely available to you on YouTube channel of the Perfection IAS. ठीक है. I wish you all the best for your future endeavors, for the day ahead, and for your preparation. Thank you for streaming in here. Jai Hind, Jai Bharat.